So, once again, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Okay. So, today we are going to discuss in our subject decentralization. Okay. So, is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So decentralization. Uh, what it means that decentralization can be viewed as an extension of delegation. When a part of the work is entrusted to other, it is known as delegation. Decentralization extends to the lowest level of the organization. See what happened in decentralization. Work can be assigned to each and every member of the organization, so that the end of time the workload which is shared by each member of the team, so there is a chances uh, of result which will be better as compared to in central area, but there is only chance. See, at the end of time, when result will in front of you, then only you can say that is it good or not. But before that, this is just assumption. Okay. So, a definition. Some of the author given definition: decentralization refers to the systematic effort to delegate to the lowest level all authority except that which can only be exercised at central point. See what happened if you are assigning the work in a central way. There is a chance at the end of time others blame you only. Because of you are in the position to take decisions. So because of you only, this project and this plan will become failure. And the moment you are involving ultimately people or employee of the organization in a systematic way, this is systematic. There is a system to involve the employee in assigned work or exercised at central point. So there is a system to involvement of employees to delegate to the lowest level of authority except that which can only be exercised. So see what happened अगर suppose हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में भी कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल है, सपोज एग्जांपल दिवाली का टाइम, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है, व्हाइट वॉश करना है, सफाई करनी है, ठीक है, चीजों को सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, ठीक है. तो इफ देयर इज अ प्रोग्राम and each one of the family member involve his or herself honestly, at the end of time आप देखो जो आपका ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में यू कैन इजीली कंप्लीट एंड अरेंज योर होम और हाउस, ठीक है. ये एक छोटा एग्जांपल था. अब इसको जब हम बड़ा करेंगे इन सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक मैनेजर होगा, उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उसकी टीम होगी. तो ये टीम क्या करेगी, अलग अलग ग्रुप फॉर्म करेगी एंड अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल दे वर्क एंड सपोर्ट ईच अदर टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
So at the end of time, there is a positive or constructive result in front of organization or institution. So this definition, which was given by Louis Allen. Okay, so this is good thing. And another definition, decentralization is simply a matter of dividing up the managerial work and assigning specific duty to the various executive skills. See, as far as work is concerned, see, you need to become skillful. If you are having a skill, you can easily manage. You can easily overcome this situation. You can easily get performed in a worst situation if you are having skills. Okay, skill in any form, whether you are having technical skill or you are having non-tech skill, whatever skill it may be, skill which is depend on somehow the area of interest. ठीक है, तो आप देखो आज की डेट में जो मार्केट और ट्रेंड है वो तो ऐसा है कि आपको जिस काम करने में अच्छा लगता है, सपोज आपको फूड बनाना अच्छा लगता है, आपको केक बनाना अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा ऐड आता है, उसमें देखा होगा आपने मम्मी वो बर्तन को साफ करते रहती है, तो वो एक बार का ऐड है, वो जल्दी से साफ हो जाता है, तो फिर वो बोलती है अभी भी मेरे पास टाइम है करके, तो वो अपना वो केक बनाने का बिजनेस डालती है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट इज दैट कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको विद प्रॉपर ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, पूरी डेडिकेशन के साथ करो। Decentralization is simply a matter of dividing up a manager work to assigning a specific duty to the various executive skills. Suppose you are completing your duty, आप केक बनाने में तो बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको पब्लिसिटी नहीं आती, तो आप यू शुड इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर्स। आज की जो यंग जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी मच कंफर्ट इन टेक्नोलॉजी, बहुत इजीली, बहुत वो प्रमोशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मतलब इतने ज्यादा कंफर्ट है ये चीजों में, सो दे आर गिविंग देयर सपोर्ट टू यू while promoting your product, तो वो लोग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ वर्क, then only you survive in this much competitive environment, ठीक है। और उसके लिए स्किल्स जो है ना वो बेस है, ठीक है। The next point is advantages of decentralization. क्या क्या इसके advantages और फायदे? Reduce the burden on top executive, ठीक है। Frankly speaking, अगर हम टॉप एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो वो कभी भी लोड अपने ऊपर नहीं रखते, they are bypass their load to their subordinate and their colleagues. But ultimately, if there is a decentralization, definitely you can easily involve your team members, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट्स है वो अच्छे होंगे। Decentralization relieves the top executive on the burden of performing various functions. See, as I already told that there is a limitation of each individual or human being, ठीक है। तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो हमेशा ओवरलोडेड होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली पेड एम्प्लॉइज। सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन, द मोमेंट दे आस्क सम क्वेश्चन, दे फर्स्ट आस्किंग टू एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव। सो हर काम के लिए उनको पूछा जाता है, उनको सवाल जवाब किया जाता है, तो अल्टीमेटली जो उनका बर्डन
As far as decentralization is concerned, up to some extent, it's reduced the burden of top executive. Then second point is facilitates diversification. Diversification, it means that you divided your workload in different teams. Diversify. Under decentralization, the diversification of products, activities, and market etc. is facilitated. Okay, तो आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हो, एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हो, मार्केट एक्सेट्रा. यू फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट सेगमेंट्स. सो यू डाइवर्सिफाई इट so that there is also facility to diversify. Okay, so this is one of the advantage of decentralization, whereas a centralized enterprise with the concentration of authority at the top will find it difficult and complex to diversify its activities and start the additional line of manufacturer or distributor. Okay, so this is one of the advantage of decentralization. The next point, to provide product and market emphasis. Product and market emphasis. Okay, so a product loses its market when new products appear in the market on account of innovation or changes in the customer demand. See, for example, as far as mobile is concerned, देखा होगा आप लोगों ने, अगर जो नई टेक्नोलॉजी के फोन आते हैं, सपोज प्रीवियस एरा में 2G था, फिर 3G 4G, अभी आने वाले समय में तो 5G भी लॉन्च हो रहा है. तो ड्यू टू चेंज और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑब्सलीट होता है और मार्केट में नई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, ये सिर्फ मोबाइल में नहीं होता. आप देखो आपका जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, ठीक है, उसमें भी BS4, 5, BS6 भी आ रहा है. ठीक है, तो आने वाले समय में और भी चेंज आएगा मार्केट में. उसके लिए द मेन थिंग इज दैट टू कंट्रोल पॉल्यूशन. ठीक है, और जो हम नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, टू सेव आवर नेचर. क्यों? क्योंकि देखो इस कोरोना पीरियड में अपने को ये समझ में आया है कि फ्रेश एयर, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में. ठीक है, तो वी शुड ऑल्सो प्रॉपर केयर ऑफ आवर नेचर. ठीक है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, ठीक है, वो रहने से भी we can easily survive, otherwise it's difficult to survive na? So the next point is executive development. When the authority is decentralized, executives in the organization will get the opportunity to develop their talent by taking initiative, which will also make them ready for managerial position. ठीक है, सी देखो मार्केट में अगर आपको रहना है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू अपडेट. ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना है, आपको चेंज करना है. कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, और कल में इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज, ऐसा नहीं आपको बहुत बड़े चेंज करने, नहीं, यू शुड चेंज, देयर इज अ स्लाइट चेंज. ठीक है, हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, स्टेयर्स. वो स्टेयर्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं, 1 by 1 स्टेप रखते हैं. सो देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. आप स्लाइड चेंज करो, लेकिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डेफिनेटली देयर इज अ चेंज. ठीक है, वो आना चाहिए, अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे हो जाओ. ओके, तो एग्जीक्यूटिव आल्सो डेवलप देयर सेल्फ, ट्राई टू मेक देयर पर्सनालिटी इफेक्टिव, ट्राई टू बिकम मोर एक्सपर्टाइज ऑन सब्जेक्ट
They are having more depth and knowledge because they are highly paid employees. Okay, so executives also, if they are having less burden in their shoulder, there is opportunity to learn, to develop, uh, to train, to take, to attend the training program as well. Okay, the next point, it promotes motivation. Definitely, decentralization stimulates the formation of small cohesive groups. ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म होते हैं इसमें, since local managers are given a large degree of authority and local autonomy, they tend to their people into closely integrated and groups. This improves the morale of employees as they get involved in the decision making process. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो सुपीरियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको क्या करना है, टू टेक डिसीजन. ठीक है, और इफ दे आर हैविंग लेस वर्कलोड, डेफिनेटली दे विल बिकम मोटिवेटेड. ठीक है, मोटिवेटेड, एंड इफ दे आर मोटिवेटेड, डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगा as compared to past track record, and which is good as far as organization is concerned. Okay, then next point is better control and supervision. If they are having limited work, if they are having their systematic work, definitely they can easily control their subordinate and supervise in better way. So decentralization ensure better control and supervision, as the subordinate at the lowest level will have the authority to make independent decisions. They are, bypass their power to their subordinate. So they don't ask to complete the task and work, and they can done their job independently without helping superior and boss. And if they are having difficulty, definitely they can ask to their seniors. Okay, if they are having some advantage, in same way they are having some limitation also. So first point is, under decentralization is it not possible to follow uniform policy and standardized procedure. Okay, so this is one of the drawback as well. See, uniformity, if अगर हमारे घर में भी 4 लोग हैं, तो चारों के जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो अगर फैमिली में देयर इज अ इनडिफरेंसेस बिटवीन मेंबर टू मेंबर, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पावर दे रहे हैं, and they can think according to their own mind, they can use their own mind and taking decision according to their own capacity. Definitely we are not in a position to maintain uniformity policy. So in same way, we don't standardize procedure. There is no standardized procedure. Each manager will work and frame policy according to his style, no doubt. Okay, so this is one of the limitation. And then second point is decentralization of authority creates problem of coordination. This is a very danger problem in decentralization. Everyone felt that I know that. If you know, then definitely there is a problem, because you are not interested to listen other, and it ultimately creates fighting with each other. Okay, so decentralization of authority create problems of coordination, as authorities lies dispersed widely
थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने पावर सबको बांट दिया है तो ये प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब कोई तो जग रहा है। ओके, मुझे लगा सारे सो रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज decentralization requires the employment of trained personnel to accept authority. It involves more financial burden and a small enterprise cannot afford to appoint expert in various fields. See, ये जो फाइनेंस है वो तो ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हमेशा फंड का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। और आप देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी जहाँ पे लिमिटेड पीपल दे आर वर्किंग विद ईच अदर, वहां पे उन लोग को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट literate and they are not having any sort of technical and non-tech degree। तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ आपका ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक देयर ओन डिसीजन। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली ये लोग क्या होते हैं थोड़े से डरे हुए भी रहते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट फ्रीली टेक डिसीजन, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और फिजिकली बहुत फिट होते हैं, ताकत बहुत ज्यादा होती है इनके पास। ठीक है, वो लोग वर्क हार्ड बहुत ज्यादा कर सकते हैं लेकिन माइंड यूज नहीं कर सकते। दे डोंट यूज देयर माइंड। ठीक है, दे सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर सुपीरियर, और जो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं उनका वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मोर फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो तो डेफिनेटली आपको विदाउट पे तो नो वन कैन इंटरेस्टेड टू वर्क, तो फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट बी अफोर्ड टू अपॉइंट एक्सपर्ट इन वेरियस, और स्मॉल इंडस्ट्रीज का तो सर्वाइवल ही बहुत डिफिकल्ट होता है। दे कैन टेक स्टेप्स वेरी सिंसियरली, क्योंकि आज की डेट में इट्स नॉट इजी टू रन अ स्मॉल बिजनेस इन दिस मच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑल्दो लोकल फॉर वोकल चल रहा है, ठीक है, बट एक कंसेप्ट को लॉन्च करना और एक कंसेप्ट को सक्सेसफुल करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द आल्सो लिमिटेशन। And the next limitation is decentralization creates problem of coordination and control. Definitely there is a problem of coordination between each other, ठीक है, और controlling का भी problem आता है। And then next point is decentralization becomes useless when there are no qualified and competent personnel। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी ड्रॉबैक कि डिसेंट्रलाइजेशन यूजलेस हो जाएगा अगर उसमें क्वालिफाइड और कॉम्पिटिटिव पर्सनल नहीं रहे। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो नाउ हाँ, द नेक्स्ट देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में नेचर ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेटेड ये भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेलीगेटेड, हाउ टू डेलीगेट मींस कैसे आप डेलीगेट कर रहे हो। ठीक है, और वन ऑफ द मेन पॉइंट इज कंसिस्टेंटली इट इज डेलीगेटेड। ठीक है, आप एक वर्क असाइन किए, कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट, वो कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, यू ट्राई टू बिजी योर वर्कर। अगर वो वर्कर बिजी है तभी वो जो अपना एनर्जी है उसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव एरिया में यूज करेगा। ठीक है, देन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ
effective decentralization. First point is costliness of decision. Costliness of decision. See, the costliness of decision is the most important factor influencing the degree of decentralization. In general, the decision involving heavy cost or investment will most probably be made at the higher level of management. ठीक है, तो आप देखो देयर आर एन नंबर ऑफ मोबाइल्स इन मार्केट, लेकिन एप्पल की बात अलग है. ठीक है, एप्पल अगर हम बोलते हैं तो देयर इज अ क्लास, देयर इज अ क्वालिटी, लेकिन वो क्लास क्वालिटी को यूज करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे. ठीक है, Yes, sir. Definitely this is one of the important thing. The next point, uniformity of policy. देखो ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मारुति के आप शोरूम में जाएंगे तो देखिएगा आप जो वहां पे लोग जॉब करते हैं उनकी ब्लू कलर की शर्ट होती है और ब्लू कलर की पैंट होती है. ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को वही ड्रेस अलॉट करते हैं, इशू करते हैं, बिकॉज दे आर शोइंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क कर रहा है सो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, सब जगह सेम है. ठीक है, आप देखो कॉफी हाउस में गए हो कभी डोसा खाने, तो कॉफी हाउस का जो टेस्ट रहता है और प्राइस जो होता है वो ऑन एन एवरेज सिमिलर ही होता है. ठीक है, आप देखो ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, उसमें आपका एक जो इमेज है, आपका एक गुडविल है, वो डेवलप होता है. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड वे टू क्रिएट your reputation in mind of the public. Okay, the next point is economic size. Economic size, देखो यहाँ पे larger the size of a business unit, the greater will be the number of department, and as a result decentralization would be preferred in large site unit. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं. ठीक है, तो वहां पे वो जो कपड़े होते हैं या फिर जो ग्रोसरी होती है, बल्क प्रोडक्शन होता है उसका. ठीक है, वो बल्क प्रोडक्शन के कारण ही उनको देयर इज अ एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी, तो वो प्राइस को क्या करते हैं, कम करते हैं, so that customer having also advantage while buying and purchasing their product, they felt that oh this is proper utilization of money and they become more satisfied. ठीक है, तो अगर आप you differentiate your product as compared to other existing brand, then only customer ready to buy your product, not only buy, they repetitively buy your product. ठीक है, इकोनॉमिक साइज जो है उसका एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर. अब देखो ये जो मैनेजर होते हैं उनका काम ही होता है मैनेज द थिंग्स tactfully. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनेजर. तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर, द शॉर्टेज ऑफ मैनेजरियल मैन पावर necessarily restrict the extent of decentralization. The dispersonal of decision making and leadership requires the availability of persons who can discharge their obligation as per authority delegated. ठीक है, अब मैनेजर का वो की होता है, आप लोगों ने देखा होगा बैंक में भी मैनेजर्स बैठे रहते हैं अपने सेपरेट कैबिन में, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि वो बहुत बढ़िया लाइफ है, लेकिन दिस इज जस्ट मिथ. क्योंकि अगर इफ यू आर मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड कंप्लीट द टास्क which is assigned to you in daily basis, weekly basis, monthly basis. और ये जो मैनेजर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, संडे में भी शटर ऑन करके अंदर घुस के काम करना पड़ता है.
ठीक है। तो इफ यू आर हाईली पेड एम्प्लॉय यू हैव टू परफॉर्म, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू परफॉर्म एनी हाउ, ठीक है। कितना भी टाइम लगे, कैसा भी टाइम लगे, आपको वीकेंड जाए तो जाए, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म, यू शुड परफॉर्म, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल टू यू, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो वर्कर्स के साथ नहीं होता। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, इसीलिए अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आपका जो मेहनत है वो भी बड़ा होना चाहिए, वर्क हार्ड, ठीक है। आपका जो डेयरिंग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग यू ट्राई टू बियर इट, ठीक है। आपको स्ट्रेस भी बियर करने आना चाहिए, प्रेशर पे वर्क करने आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजर्स। The next point, history of the enterprise, it means that past track record की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम भिलाई छत्तीसगढ़ की बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट वन ऑफ द गुड एग्जांपल, ठीक है। आपको पता है इसके बहुत सारे सिस्टर कंसर्न, मतलब इसके बहुत सारे अदर ब्रांचेस भी हैं, बोकारो, राउरकेला, ठीक है, दुर्गापुर। तो कई बार ऐसा होता है, ये भिलाई स्टील प्लांट तो हमेशा ही प्रॉफिट देता है, लेकिन उनको भी साथ में लेके चलना है तो इसका प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज और कम हो जाता है, इट्स हैपेंड। लेकिन इस साल देखो, इस साल भी भिलाई स्टील प्लांट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अभी इनका वेज रिवीजन का चल रहा है, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। और ये जो भिलाई में आपको इतनी मार्केट में पैसा दिखता है वो बिकॉज ऑफ दिस स्टील इंडस्ट्री ओनली, क्योंकि यहाँ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके पास पैसा है तो वो मार्केट में इसको खर्च भी कर देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द एंटरप्राइज, तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट का हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा, बहुत पुराना है, सेकंड 5 ईयर प्लान में बना था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रशिया, यू ऑल नो दैट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट, द फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का जो फिलोसफी है वो है इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट, इज टू एनहांस द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वन ऑफ द मेन मोटो है वो किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इनका फिलोसफी हमेशा ये रहता है टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू परफॉर्म, देयर शुड बी सम रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काम करो, मेहनत करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओगे तभी तो पैसा देंगे, ठीक है। तो हमेशा ये फिलोसफी रहा है मैनेजमेंट का कि वो हमेशा क्या करने बोलते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने बोलते हैं, ठीक है। तो द चार्टर ऑफ द टॉप लीडर and the philosophy possessed by him will have an important influence on the extent to which authority in an enterprise is centralized or decentralized. Then next point is decentralization of performance, ठीक है। तो यहाँ परफॉर्मेंस का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। इट मींस दैट सी व्हाट हैपेंड, सी एवरी इंडिविजुअल हैविंग सम फ्रीक्वेंसी। तो कई बार क्या होता है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, देखो टीम में भी ऐसा होता है ना, कभी किसी मैच में कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, कभी किसी मैच में कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, तो एट द एंड ऑफ टाइम अल्टीमेटली जो टीम है वो क्या होती है, व्हाट विल बी हैपन, द टीम विल बी विनर। तो इन सेम वे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कभी कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म किया, कभी कोई अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म किया, सो एट द एंड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन विल इन अ पोजीशन टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्ट एंड रीच देयर डेस्टिनेशन। सो दिस इज अल्टीमेटली द मेन मोटो, ओके। सो decentralization of performance, it means that whether the operations of the organization are concerned at the one place or in a region or dispersed to different territories, ठीक है, कहीं पे भी हो, the main motto is to you have to perform, ठीक है, in any how. They won't consider excuses, okay. So this is decentralization of performance. And the next point is environmental influences.
सी देखो एनवायरमेंट यानी आर सराउंडिंग्स which also influence, it means that motivates. As far as छत्तीसगढ़ is concerned, देखो यहाँ जो नेचर है वो बहुत रिच है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है which is also very rich. ठीक है, तो अगर आप ये जो अपना नीचे का एरिया है, ठीक है, बस्तर साइड में जाओगे तो वहां का जो नेचर है वो बहुत रिच है. आपको पता होगा कि जो वैजाग पोर्ट है वहां से जो 100 साल का टेंडर है ऑस्ट्रेलिया के साथ. ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में. ठीक है, तो हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं. नॉट ओनली यूज, वी शुड इफेक्टिवली यूज ना. एनवायरमेंटल influences most of the factors determining the extent of decentralization dealt so far are related to the organization. In addition, there are many other factors which are external to the business yet have an impact on the degree of decentralization, such as government control, tax policy, and national unionism. ओके, सी टैक्स पॉलिसीज भी देखिए आप लोग. टैक्स भी सीतारमण जो है अभी बहुत सारा चेंज ला रही टैक्स पॉलिसीज वगैरह में भी. कॉर्पोरेट को बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है उसको डिडक्ट किया जा रहा है सो दैट you can survive in this much pandemic और कोरोना पीरियड. क्योंकि बिजनेस अभी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है. ठीक है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन कंडीशन आल्सो इम्पैक्ट योर बिजनेस. सो ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ इफेक्टिव decentralization. Okay. Okay. Yes. So now we come to and today's topic. अरे आज तो बहुत कम बच्चे आए लग रहे हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे थक गए हो क्या तुम लोग आज? Yes, sir. अरे एक सेकंड ना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ ना तुम लोग. Okay then, have a nice day. ठीक है, Thank you, sir. I hope कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को. Yes, ठीक है, sir. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.